Let us quickly recall the formula before we do some practice. So we had discussed how to name the resistances properly, right? So these are the three terminals where we are going to place a delta connection or a star, its equivalent star, right? Or vice versa. So whenever you are making a delta connection, you should remember that between the junctions A and B, you should place C, that is RC, right? Between A and C, you should place RB, and between B and C, you should place RA. And while making a star connection corresponding to A, B, and C, you should use the numbers 1, 2, and 3. So R1 should be connected to A, and R2 to B, and R3 to C. So the network here, which is shown in blue, is a star network, and the one shown here in black is a delta network. So depending on the requirements, you can convert a delta to a star or a star to a delta, right? So the formulae shown here, they are um, for a delta to star. So I hope you remember all the formulae. For as far as star to delta conversion is concerned, in that case, the knowns will be R1, R2, and R3, and the unknowns will be RA, RB, and RC, right? So we can express RA, RB, and RC in terms of R1, R2, and R3. So does anybody remember? RA is equal to R1, R2, R1, R2 R2, R3 R2, plus R3 plus R3, R3, R1 R1 divided by upon R1. R1. divided by R1. good. तो ये corresponding यही वाले values, denominator will remain same. Sorry, numerator will remain same. Numerator. Yeah, and denominator will change. So corresponding to B, it is 2 here. And similarly, RC will be R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1 divided by R3. So we just need to remember these formulae, right? For a delta to star, we know that this value R1 should be equal to the product of the resistances which are in delta connected to A. So RB, RC, and that is divided by sum of the three resistances, right? So let us do some problems based on this. So this is a direct question. In the exam, we should not expect this kind of direct questions where you are being asked to directly transform a network. So here you are given a Y network. Y is a star. So this is a star network. The points are A, B, and C. And you have to calculate the equivalent delta, right? So yes. Is there any question? Am I audible? Yes, sir. Yes. So Yes. So a star is given here, R1, R2, and R3. The values are given for R1, R2, R3. So this is 10, this is 20, and 40. So we are required to calculate the equivalent delta between A, B, and C, right? So I am drawing those resistances also. So this will be marked as RC, this is RA, and this is RB. So we remember the formula. I'll just calculate one of these. So RA will be equal to R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1 divided by R1. So all the values are known here. So this will be 10 into 20 plus 20 into 40 plus 40 into 10
divided by 10. So I get, what I get here is 20 plus 80. Please check if I make any mistake, correct me. So this will be 140 ohms, right? So this is very simple, like directly based on a formula. Let us go to questions where we are required to reduce the network, right? For example, in this question, you have to obtain the equivalent resistance RAB for the circuit and use it to find current I. So this resistance RAB is between this junction A and this junction B. So if you look here between junction A and B, there is a network of resistances. There is no source in the network inside the boundary that I have drawn, right? So all you need to do here is to reduce this network in this form. The whole network should be converted into one resistance, which is equal to RAB, and you are required to calculate this current. So this current is 120 by RAB, right? So let us see how to do it. So this is the network given here, and we can see that there is no direct series or parallel connections here, right? There is no series or parallel connection, but we see that there are a number of deltas and stars here, and we need to find out what type of conversion can we do so that we can simplify this network. So let us try to find out what is easier here. For example, if I take these three junctions A, B, and C, then I see that there is a delta, there is a star between them, right? Of comprising 10 ohms, 20 ohms, and 5 ohms. So if somehow I can convert this star into a delta, suppose I convert this network into a delta, then this network will look like this. And if I convert it into a delta, I am marking the resistances also. This should be marked as RB, this should be marked as RA, and this should be marked as RC. So will the problem become easier if I convert this star into a delta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it will become easier because then you will see RC in parallel with 30, right? RB will be in parallel with 12.5 and RA will be in parallel with 15 ohms. And amongst those connections also, the parallel connection between RB and 12.5 will be in series with the equivalent of RA and 15 ohms. And that combination will be in parallel with 30 ohms. So this simple conversion of this star into a delta will make the network reduction easier, right? So let us do it. So we have a star here. What should be R1? 5, 10, and 20 ohms. What resistance should be designated as R1? 10 ohms. 10 10 ohms. ohms. Good, 10 ohms, right? And RB should be 20 ohms and RC should be 5 ohms, right? Sorry. R2 should be 20 ohms and R3 should be 5 ohms. So now we can calculate RA, RB, and RC. So RA will be R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1 divided by R1. So let us calculate. Should I solve the complete problem or you will be able to do so? We will be able to. So we'll do it. Okay. We will do it. Okay, so let us look at some alternative also here. I'll take up this network again. सर R1 R2 R3 बताना हमें कैसे पता चलेगा एक बार. हाँ जी. देखो हमारे पास
जब भी हम स्टार या डेल्टा की बात कर रहे हैं तो वी विल हैव थ्री जंक्शंस, राइट? इनका नाम कुछ भी हो सकता है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने उनको ले लिया ए, बी एंड सी, ठीक है? तो ए, बी और सी के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स भी ले लिए 1, 2 एंड 3। अब फॉर्मूले को याद रखने के लिए और उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए हम अगर प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो वी विल नेवर मेक अ मिस्टेक। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग अ डेल्टा हियर, तो इस डेल्टा के जो रेसिस्टेंसेस हैं मुझे उनको प्रॉपरली नाम देना आना चाहिए। तो जो रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, वो आरसी होगी। राइट, उसको हम आर सी कहेंगे, ठीक है? इसको हम आर ए कहेंगे और इसको हम आर बी कहेंगे। इसी तरह से जब हम स्टार बना रहे होंगे लाइक दिस, तो जो आर ए से कनेक्टेड होगा दैट शुड बी R1, दिस शुड बी R2 एंड दिस शुड बी R3, ठीक है? तो इस तरह जरूरी नहीं है कि वो ABC हो, वो PQR भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो, बट वी शुड रिमेंबर कि हम किस तरह से डेजिग्नेट कर रहे हैं इसको, ओके। ठीक है? तो पिछले बार अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमने एक स्टार बनाया बिटवीन ए, बी एंड सी, अगर उसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया तो ये नेटवर्क को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम और कोई कन्वर्जन भी करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ डेल्टा। फॉर सर, एग्जांपल, हाँ ये जी, जैसे ये जो ए वाला पॉइंट है, अगर हम ACN को करें तो मतलब ये 12.5 और 10 ओम वाले जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनके सेम पोटेंशियल है, तो उसको एक ले लें और C और N को करें। एग्जैक्टली कर सकते हैं हम। तो वो स्टार होगा या डेल्टा होगा? सर स्टार हो जाएगा ना, सॉरी डेल्टा डेल्टा। गुड, डेल्टा होगा। तो ही सेइंग कि हम ये वाला जंक्शन एक कॉमन जंक्शन है, ये राइट, सेम पोटेंशियल है यहाँ पर। सो अगर हम A, C और N इसको अगर हम एक डेल्टा बना लें, so this is A, this is C and this is N, and these resistances are known. This is 12.5 ohms, this is 5 ohms and this is 10 ohms. अगर इस डेल्टा को अगर हम एक स्टार में कन्वर्ट कर लें, let us convert it into a star, तो अगर उसको एक स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट? तो मैं उसी नेटवर्क को यहां भी बना रहा हूं। सो बिटवीन A, C एंड N, ठीक है? वो इस तरह के एक नेटवर्क बनेगा। इस तरह का नेटवर्क बनेगा तो विल इट मेक थिंग्स इजियर? से पहले तो डेल्टा ही नहीं दिख रहा अच्छे से। अच्छा, let me draw it again. तो डेल्टा को देखते हैं अच्छे से। See, a delta looks like this, है ना? यहां पर देखो, ये वाला जो जंक्शन है और ये वाला जो जंक्शन है, they are same because the potential is same, ठीक है? तो let us mark it as A, this, so मैंने उसको यहां पर ऐसे शो कर सकते हैं, कॉमन जंक्शन से A, then this is C, so here this corresponding junction is C and this is N here, so I'm marking this as N. Now you see it is a clear case of a delta connection. This is 12.5 ohms, this is 10 ohms and this is 5 ohms. अभी ठीक है? यस सर। इसी तरह से देखो, आपको एक और डेल्टा नीचे भी दिखेगा बिटवीन B, C and N. See, this junction is B, C and N.
Between C and N, the resistance is 5 ohms. Here it is 15 ohms, and here it is 20 ohms. और कोई डेल्टा दिख रहा है क्या? 10, 20 और 30 वाला? Yes, 10, 20 and 30. That is also making a delta. The corresponding junctions are A, N and B. Right? So मैं यहाँ पर वो बना रहा हूँ A, N and B. You see between A and B, there is a resistance of 30 ohms. Between A and N, there is a resistance of 10 ohms. And between N and B, there is a resistance of 20 ohms. Right? Similarly, you can see multiple stars also here. You can see a star between 12.5, 15 and 5. इससे पहले जो हमने स्टार यूज किया था that was 10, 20 and 5 ohms. तो हमें इनमें से कोई भी एक स्टार को या किसी भी एक डेल्टा को किसी दूसरे डेल्टा या किसी दूसरे स्टार में कन्वर्ट करना है बस. राइट? जनरली इस एक ही स्टेप से we can reduce the network easily. Right? So अभी हमने क्या किया, A, C और N वाला जो डेल्टा था उसको हमने स्टार में कन्वर्ट करना है. तो इसको जब हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, A, C और N वाले डेल्टा को, तो there will be a resistance which will be connected to A. I am calling it R1. एक C से कनेक्ट होगा उसको मैं कह रहा हूँ R3, और एक ये N से कनेक्टेड है उसको मैं अभी R2 कह रहा हूँ. राइट? इसको हम B मान ले रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला. तो देखो इसी कनेक्शन को अगर मैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस करूं, A से एक है, C से एक है और N से एक रेजिस्टेंस है. ठीक है? सो आई हैव मार्क्ड दिस एज R1, दिस इज R3 एंड R2. तो जब आपने इस नेटवर्क को रिड्यूस कर दिया, मैं इसको एक बार क्लैरिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आई एम showing it here again. So this was the network, and what I'm trying to do is I'm converting this delta into a star. So I'll redraw this network here. This was 120 volts A and B, और ये 12.5, 5 और 10 ohms उनको मैं हटा रहा हूं, तो A, C और N, अब वहां पर क्या आ गया, एक स्टार आ गया. राइट? लेट अस कॉल इट R1, R3 एंड R2. तो ये वाले तीन रेसिस्टेंसेस हट गए अब, और उनकी जगह एक स्टार आ गया है, C, N एंड A, और बाकी चीजें दे रिमेन एज दे वर. सो ये वाला रेसिस्टेंस इट रिमेन्स 15 ohms. N से B जो है दैट विल आल्सो रिमेन 20 ohms, एंड A to B जो बाहर की तरफ से एक रेसिस्टेंस था that will remain 30 ohms. Right? So this is what you get once you convert that delta into a star. अब मुझे बताओ इसको कन्वर्जन करके कोई फायदा हुआ क्या? हमारा टारगेट ये है कि A और B के बीच में हमें हाँ हमें फायदा मिल रहा है. क्या फायदा मिल रहा है? देखो R2 and 20 सीरीज वो सीरीज में दिखेगा, फिर R3 और 15 वो भी सीरीज में दिखेगा, फिर इनका कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में उसमें पैरेलल में हो जाए, और फिर R1 के साथ वो फिर सीरीज में, फिर वो पैरेलल में हो जाएगा 30 के साथ पैरेलल. राइट. ठीक है? तो इस तरह से फिर वो रिड्यूस होता चलेगा, होता जाएगा once you do that conversion. Right? So similarly like ऐसे ही questions हमें देखने को मिलेंगे. So this is again a bridge network. यहाँ पर भी बहुत सारे stars हैं, बहुत सारे deltas हैं. तो let us say that let us mark this as X, Y and Z. तो ये X, Y, Z के बीच में कुछ दिख रहा है क्या हमें? Is there any star or delta here? डेल्टा. It's a delta. So we can convert this delta into a star like this.
और फिर उससे हमें फायदा मिल जाएगा, सीरीज मिलेगा, ये दोनों रेसिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में, फिर अगेन वन सीरीज एंड अगेन वन मोर सीरीज। 10, 20, 50 का वो नहीं बना सकते हम स्टार? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। 10 ये भी करके देख लेते हैं। दिस इज let us mark these points as capital A, capital B and capital C, right? So between this capital A, capital B and capital C, what you see is a star connection. So if I convert this star into a delta, it will look like this. और फिर वो स्टार कनेक्शन जो होगा वो हट जाएगा. So let us mark these resistances RC, RA and RB. इससे कोई फायदा मिलेगा हमें? जब ये वाला कन्वर्जन हमने कर दिया तो now these resistances are not there. Is there any benefit of doing so? 24 और Yes, RC sir. Yes. Definitely there is benefit. सर है थोड़ा सा में थोड़ा सा नहीं है, पूरा बेनिफिट है. देखो ये 24 and RC will be in parallel, 30 and RA they will be in parallel, फिर उनका एक सीरीज बन जाएगा, राइट? फिर एक और RB के साथ वो पैरेलल में आ जाएंगे और जो नेट रेजिस्टेंस है वो 13 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा, तो फुल्ली वो रिड्यूस होता चला जाएगा. ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही जगह पर कोई स्टार या डेल्टा कन्वर्जन करना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस प्लीज आस्क. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ऑन दिस.